Hi everyone, apana manaka samasta inku ehi video re bahut swagata ta ajira ehi video re ame apana manka sahita. Public administration re examine the feminist perspectives in governance. Ra long question answer, ra notes, share and discussion kariba. Let's start. Feminist perspectives in governance offer critical insights into the ways in which power, decision making and policy formulation impact different genders. These perspectives highlight the historical and structural inequalities that have marginalized women and other gender minorities, aiming to create more inclusive and equitable systems. Here are some key elements of feminist perspectives in governance. By incorporating these feminist perspectives into governance, societies can work towards creating more inclusive, responsive, and equitable systems that benefit everyone, regardless of their gender identity. It involves a re-evaluation of power dynamics, social norms, and institutional structures to address historical and ongoing gender-based inequalities. We hope all enjoy this video and understand the topic. Start by notes. Let's start. Examine the feminist perspectives in governance. The governance रे feminist मानक नारीवाद तांको दृष्टिकोण कौन रही ना gender perspectives has been and continues to be a factor of public administration. तो gender perspective मध्ये public administration गोटे continuous कोन भाबे गोटे factor रही बा उत्पादन साची. Study of public administration essentially demands the examination of the feminist perspectives, the need for securing gender equity, gender justice, women empowerment, नारी जो कौन empowerment बोले नारी सशक्तिकरण and elimination of exploitation of women has made it essential for public administration. तो women बोले कौन निहाती आवश्यक public administration रे to understand and keep in full view of gender perspectives, particularly in the process of policy making and implementation. तो policy making रे मध्य आ ताको implementation कौन सब लागू करे मध्य ए गोटे निहाती आवश्यक. In other words, अन्य अर्थरे कहया गले feminism admits the natural division of society based on sex but strongly citizens and rejects gender based system of discrimination, inequality and dominance of women which is present in society and which has really made of women are subjected, discriminated, exploited and suppressed by the class of society. तो अन्यत्र कहले फेमिनिस्ट एडमिस कोन करछि ना नेचुरल डिवीजन भाबे कोन हम डिफाइंड हिछि ना सोसाइटी वुमेन मेन सब डिफाइंड सब अब सोसाइटी बेस्ड ऑन सोसाइटी गोटे बेस हिछि सेक्स बट स्ट्रांगली सिटीजन्स एंड रिजेक्ट जेंडर बेस्ड सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किंतु आमे कोन जो जेंडर बेस्ड सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन को सब हम रिजेक्ट करछंती जेना आ इनइक्वल असमानता मध्य आ डोमिनेंस ऑफ वुमेन व्हिच इज प्रेजेंट इन सोसाइटी किंतु डोमिनेंस ऑफ वुमेन कोन वर्तमान सोसाइटी कोन प्रेजेंट हेलानी एंड व्हिच हैज really made women also subordinate, subjected, discriminated, exploited and suppressed class of society. नेक्स्ट क्या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स. तो फेमिनिस्ट दृष्टिकोण कौन नारीवाद दृष्टिकोण हिसाब से इन कंटेम्पोरारी टाइम्स वर्तमान समय सिग्निफिकेंट अटेंशन इज बीइंग टू द स्टडी ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, gender issues, particularly role of gender in politics and administration with a particular focus on the role of women in society, economy, women मध्य society, economy, politics, administration has emerged as a very popular and important issue. तो बर्तमान women मान मध्य ये सब जो इंटरफेस करिया माने आसीबा आ सब रोल प्ले करिबा ता मध्य गोटे बर्तमान गोटे इंपोर्टेंट इश्यू भाबे देखा गलानी. For understanding the gender perspectives of politics as well as nature and role of gender in modern society, let us clearly understand बर्तमान हम क्लियर देखिबा the difference between sex or gender and between sex based discrimination and gender basis which more or less कोन characteristics every human society प्रत्येक ह्यूमन सोसाइटी हर को देखिबा मिले. Here are some key points to consider when examining feminist perspective in governance. तो आमे किछि बर्तन की पॉइंट देखिबा जहा कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव माने नारीवाद दृष्टिकोण रो गवर्नेंस को नेइ कोन कोन सब की पॉइंट्स ताको हम देखिबा. तो फर्स्ट होछि intersectionality. तो फेमिनिस्ट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव्स emphasize the importance of intersectionality. This means recognize that individual experiences of governance are shaped not only their gender but also by the factors such as race, class, sexual and orientation and more. तो इंडिविजुअल जो गवर्नेंस रो तुम आसंती एक्सरसाइज करंती एक्सपीरियंस करंती ताको खाली शेप खाली कोन ताको खाली जेंडर को नहीं होता माने कोन को जेंडर मेल ना फीमेल की मेन वुमेन ताउ नहीं दे ताको छाडी की मध्य किछ अलग फैक्टर अछि जोता कि कोन रेस हे पारे, क्लास हे पारे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मध्य हे पारे एंड मोर मध्य अर्थ हे पारे.
नेक्स्ट हूँ कौन रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन कौन ना फेमिनिस्ट गवर्नेंस स्कॉलर्स ऑफ्टन क्रिटिक द लेक ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन ऑफ मेकिंग बॉडीज। तो ताके जो फेमिनिस्ट स्कॉलर मैंने रही फेमिनिस्ट गवर्नेंस कहते प्रत्येक जो डिसीजन मेकिंग बॉडी अच्छी आमर से कौन वुमेन मान लेक अच्छी मैंने वुमेन मैंने बहुत कम अच्छी दे आर्ग्यू से आर्ग्यू करती जे दैट जेंडर प्रायोरिटी इन पॉलिटिक्स ऑन गवर्नेंस इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट वुमेन्स perspectives and interests are the taken into account। तो कहते वुमेन मान सब भाग ना दरकार एकाउंट रहा दरकार वुमेन मैंने कहीं कम रहे जेंडर क्वार्टर्स एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज आर समटाइम एडवोकेट टू एड्रेस दिस इश्यू। नेक्स्ट हूँ कौन ना पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग कौन ना फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स हाईलाइट द नीड फॉर जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिविटी राइट्स डोमेस्टिक वायलेंस maternity, paternity leave and economic opportunity are areas of the scrutiny from a feminist perspective। तो policy making मध्य तांग रहिबा दरकार। नेक्स्ट violence against women। तो वुमेन्स को मध्य जो violence ताकू against करिया feminist scholars in governance focus on combating violence against women both in the public and private space। This includes addressing issues like domestic violence, sexual harassment and human trafficking। Feminist perspectives promote legislation and policies that aim to protect women's rights in society। नेक्स्ट हूँ पार्टिसिपेशन। तो भाग ना फेमिनिस्ट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव्स आर्ग्यू फॉर इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस मैंने वुमेन मान भाग ना से कहते आर्ग्यू कर इनक्लूडिंग नॉट ओनली इलेक्टेड ऑफिशियल्स बट ऑल्सो सिविल सर्वेंट मैंने कौन से कहते खाली इलेक्शन छाड़ी जो सिविल सर्वेंट अच्छा से भाग ना दरकार एडवाइजर्स उपदेश क्षेत्र में एंड कम्युनिटी ऑडिटर्स they also highlight the importance of women's participation in civil society organization and grassroots movements को सेन कहते। नेक्स्ट देखिए इंस्टीट्यूशनल चेंज। तो इंस्टीट्यूशन संस्था सब जो चेंज हो ना फेमिनिस्ट स्कॉलर्स एम्फासाइजेस द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल चेंज विद इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। This involves challenging and changing the existing power of dynamics in norms and practices that position gender inequality. It may also involve reforming institutions to more inclusive and responsive to the diverse voices। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कौन ना इकोनॉमिक डिसपैरिटीज बिटवीन जेंडर आर ए क्रिटिकल कंसर्न फॉर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स इन गवर्नेंस policies that promote equal pay for equal work, support for women entrepreneurs and access to economic opportunity or often advocated। तो कौन वुमेन में देख इंटरप्रेन्योर अच्छा तो वुमेन इंटरप्रेन्योर थे तो से सपोर्ट रे से गोटे पॉलिसी प्रमोट कर कौन उभय को कौन इक्वाल पे फॉर वर्क कर एंड आसेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कौन जेपरिक गोटे इक्वाल अपॉर्चुनिटी गोटे समस्त को भाग ना गोटे सुजोग दिज्व ताको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कहुए। नेक्स्ट हूँ कौन ग्लोबल रेस्पेक्टिव। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव कौन ना फेमिनिस्ट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव्स आर नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल नेशन। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कौन गोटे खाली सिंगल नेशन में सजाऊनी पूरा ग्लोबल होगा दरकार। दे कंसिडर ग्लोबल इश्यू सच एज वुमेन्स राइट्स and conflict zones, human trafficking and intersectional gender based violence। Transnational feminist movements often work to address this issue in global scale। Queer and trans perspectives। Modern feminist perspectives increasingly include the participation and rights of queer and transgender individuals। These perspectives advocate for policies and practices that recruit and protect the of LGBTQT individuals in the governance and society। तो क्यूर एंड ट्रांस पर्सपेक्टिव से कहा जाए। नेक्स्ट हूँ कौन ना चैलेंजिंग पैट्रियार्ची। तो चैलेंजिंग पैट्रियार्ची कौन ना एट द कोर ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स मैंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कौन देखिए बोले केंद्र में इन गवर्नेंस इज ए चैलेंज टू कौन पार्शियल नॉर्म्स इन स्ट्रक्चर्स। This involves questioning to transnational power of dynamics and advocating for more inclusive, equitable and diverse forms of governance। यहाँ को चैलेंज पैट्रियार्ची कहा जाए। नेक्स्ट देखिए
Examining feminist perspectives in governance involves considering these various viewpoints को देखिले in that their implications तो कि सब implement करा जाउची for promoting gender equality कोन आमे सब काहे करछ ना एहा गोटे gender equity रहे गोटे माने कोन लिंग तो समानता रहो गोटे इन सोशल जो सामाजिक न्याय क्षेत्र में मध्य इन पॉलिटिकल इन गवर्नेंस सिस्टम आ हमर राजनीतिक आ हम सरकार जो सिस्टम अछि ताहार मध्य गोटे इक्वालिटी रहो बोली आमे सब देखिली कले तो एतला फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स रो किसी व्यू पॉइंट्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जदि आपण माने यार नोट्स चाहती ता डिस्क्रिप्शन रे मु टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देछि सेथिरे अनेक गुडा कोन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अछि आपण माने कोड 5 6 7 रो समस्त पाइ परिबे तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि आपण नोट्स चाहन जॉइन हेंतु